Anyway, let's Yes go. sir. ये सर आपने बता दिया था आपको प्रॉब्लम है। Yeah. Okay, so I don't like with clause actually, so I would like you to go with open function only. ठीक है? वैसे there can be a question at times like what is the difference between opening a file using with clause and opening the file regularly like with the regular method. So the answer for that is, guys, what would be the सर वो फिर जब हम विद क्लॉज से खोलते हैं तो वो एग्जैक्ट बफर में ही सेव नहीं करता, वो बफर से सीधा फाइल में राइट करेगा फंक्शन को। पर जब हम एफ इज इक्वल टू ओपन से करते हैं तो हमें आखिरी में एफ डॉट क्लोज लगाना होता है, जिससे जो सारा डेटा है वो पहले बफर में लिखा जाता है, फिर एफ डॉट क्लोज से वो सारा बफर से एक ही बार में डायरेक्टली फाइल में लिख देगा। तो एफ क्लॉज से हमें फाइल क्लोज करने की नीड नहीं होगी। yes, very good, very good. So what happens at times कभी कभी fill in the blanks में आ जाता है with वाला, तो just take care. जैसे we will just make that distinction here. So if you are trying to open a file with the help of open function itself, so how you go about that? First you write what? The file object which is f, then open function, whatever file name you want to create that, and its mode. Or just write or rf and open this same file with clause, just to make a distinction. Just do that in the next line. So the only difference is whenever we open file with clause, the first thing is that with is there. So you will find this with even in that sort of question where it is in form of a fill in the blank. But what will be missing is this file object. So what happens is they put a blank for after this as. So they'll put a blank after this as. You will find what you have to write inside from the program itself. You have to look at the code. You will definitely find one file object either with the write function or either with your read function. So that is the thing, वहां से आपको वो easily मिल जाएगा. So this is the only way. We put a colon and we will write whatever you want to perform inside the block of with clause. That is the only difference. So just comment out this particular line. Okay, now एंड सो yes. सर डॉट डीएटी किस लिए यूज होता है? Dot dat, Arav will answer all your queries because these queries are like quite फाइल no. बाइनरी फाइल के लिए हम डॉट बेन और डॉट डाट दोनों एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, टाइप ऑफ बाइनरी फाइल हो जाएगा। Very good. That is the only thing, Gorang. Anything else? नो सर। Cool. So in your so now we have used this file name is file2.txt. You have missed one thing in this with clause, by the way, Arav. Like you wrote the file name file2.txt. What is missing is the वो मैंने mode. इसलिए लिख दिया क्योंकि Yeah, सर वो ऑटोमेटिकली कन्वेंशन है ना, रीड मोड में खोलेगा तो yeah. उससे रीड में खोल दिया सीधा। ओके. सो बेसिकली फिर भी आप लिख दो वहाँ पे फाइल टू डॉट टी एक्स टी कॉमा करके योर मोड इन विच यू वांट टू ओपन योर फाइल, राइट? Okay, so we यस are सर। opening the file in the right mode. The reason for that is, Gaurang, the reason for that is because the file does not exist. So if you'll try to open this sort of file which does not exist in the directory in read mode, definitely you will get an exception, right? So first of all, we must create the file. So let's create the file2.txt. Arav is just saving the code. Let's take a string from the user str1,
str1. Okay, file2.py, it's saved. We never take variables like this, Arav. Always take sensible variables. str1 equal to input, enter a string. Okay, so basically we'll try to create a file. Okay, we'll try to create a file. First we'll write the data into it, and then we will try to display the number of times a character has appeared in that para or a string or a line, whatever it is. ठीक है? So we'll try to do that. उसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा which will be very useful for the variety of questions based on this concept which is text file. ठीक है? So पहले हमने ले लिया str1 equals to input enter a string. Very good. Now the thing is अब दो तरीके के functions होते हैं. एक होता है split function and एक होता है before we actually create this file, I would like you to comment out f equals to open वाली line. Arav, just comment it out. Comment it out. Just want to show you something. Cool. str1 equals to input enter a string. Good. Now what? Data equals to, or just write data or word equals to. Do that. Word equal to data equals to. Okay. Word equals to str1 dot split function. str1 dot split function print word. Now this split function is very very helpful. Yes, Gorang. सर हमने ये मतलब कि एफ ओपन जो हमने कही थी टीएक्सटी फाइल, हाँ जी. उसको हमने कमेंट आउट wait Arav, never run codes like this यार. हाँ जी बोलो. सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने अभी टीएक्सटी फाइल खोली थी एफ इक्वल्स टू ओपन करके, और उसके बाद हमने उसको कमेंट आउट करके str इक्वल्स टू इनपुट क्यों करा हमने? What I wanted to show you is अभी हम फाइल हैंडलिंग से थोड़ा सा दूर होके एक स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं जो 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था, बट मोस्ट प्रोबेबली आपने क्योंकि वो चीज़ इतनी लेवल पे यूज़ नहीं की है, सो यू वुड हैव एक्चुअली फॉरगॉट इट. सो द थिंग इज कि अब वो चीज़ एक बार रीविजिट करके, क्योंकि उसका यूसेज है यहाँ पे टेक्स्ट फाइल्स पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको स्प्लिट फंक्शन वहाँ पे चाहिएगा ही चाहिएगा. In 90% of the questions you will apply split function. ठीक है? तो that is the thing. एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, let me just try to recall it meanwhile we are doing it. ठीक है ना? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था. चलो मैं बताता हूँ आपको. It was something related to scores and you know where we have to actually add up all those scores ending with 0. Suppose 5 players ने स्कोर करा है 100, 300, 351 whatever ऐसे. तो जितने भी प्लेयर्स ने 0 एंडिंग में स्कोर किया है तो उनको ऐड करके हमें सम डिस्प्ले करना है. सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद योर टेक्स्ट फाइल्स ओनली, बट फॉर नाउ सो व्हाट हैपेंड अभी के लिए इज वी मूव्ड अ लिटिल बिट फार फ्रॉम फाइल हैंडलिंग एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि स्ट्रिंग्स कैसे काम करते हैं. तो स्ट्रिंग्स का ही एक मेथड है स्प्लिट फंक्शन. अगर इस फंक्शन को मैं किसी एक स्ट्रिंग पे, वो लाइन हो सकती है, वो पैरा हो सकता है, इट कुड जस्ट बी 5 वर्ड लाइन वट एवर, अगर मैं उस पर अप्लाई करता हूँ वट इट विल रिटर्न टू मी इज अ लिस्ट. वट दैट लिस्ट विल कंसिस्ट ऑफ, उस लिस्ट के अंदर उस लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं. बेसिकली दिस स्प्लिट फंक्शन स्प्लिट्स ऑल द वर्ड्स and make them elements of a list on basis of that space in between those words. ठीक है? अभी हम रन करते हैं कोड को and let's try to look at what I am trying to say. Just run the code Arav and write my name is Arav and I am confident in CS. Just write that.
ओके ग्रेट. सो ही प्रेस्ड एंटर एंड यू कैन सी कि उस स्पेस के बिहाफ पे उसने एंटायर जो आपकी लाइन थी ना उसको क्या कर दिया, uh, मतलब it has converted that entire line into a list of words consisting that line. ठीक है ना. सो यू कैन सी, तो बेसिकली द थिंग इज स्प्लिट फंक्शन बाय डिफॉल्ट किस चीज़ पे काम कर रहा होता है, इस उस स्पेस पे जो दो वर्ड्स के बीच में है, जहाँ भी उसको स्पेस दिखेगा वो उस पर्टिकुलर वर्ड को एक एलिमेंट बना देगा लिस्ट का. नाउ फाइल हैंडलिंग में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को, अभी हम वो चीज़ ट्राई करेंगे, लेकिन मेरा मकसद क्लासेस में ये है दैट यू रीच टू दैट पर्टिकुलर स्टेप वन बाय वन. ठीक है ना. मैं आपको डायरेक्ट बता दूं बेटा ये होगा, आपको ये चीज़ कर रही होगी, नहीं. आप खुद से उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सको. लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, जब भी किसी क्वेश्चन को करने की बात आती है ना, उसको करने में मज़ा तभी आता है जब आपको उसकी ए बी सी पता है. कैसे मैं सी तक आऊँगा, जब आपको ए बी का पता होगा. तो जब आपको पता होगा ना कि कैसे, आपसे वो क्वेश्चंस पूछेगा कि एक फाइल के अंदर ऐसे वर्ड्स का काउंट बताओ जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, इस तरीके से, मतलब ट्विस्ट के साथ क्वेश्चंस आते हैं एंड दे सीम वेरी हार्ड. या फिर वो बोलेगा कि ऐसे कुछ वर्ड्स का काउंट बताओ जो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर मतलब है कंटेंट, उसके अंदर ऐसे वर्ड्स का काउंट बताओ जिनकी लेंथ 5 से ज़्यादा हो या 5 से कम हो या इक्विवेलेंट टू 5 हो. तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तो उन पे हम स्प्लिट फंक्शन ही लगाएंगे. क्यों? क्योंकि वर्ड से जुड़ी हुई चीज़ है. जब भी आपको किसी एक टेक्स्ट फाइल से वर्ड्स को फेच करना होगा इन फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस में, बेसिकली टेक्स्ट फाइल्स में, तो आप हमेशा स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करोगे. ठीक है. द रीज़न बीइंग, क्योंकि स्प्लिट फंक्शन जैसे ही आप अपनी एंटायर फाइल पे लगाओगे, चाहे उसके अंदर 100 वर्ड्स भी हों, तो आपको वो सारे वर्ड्स मिल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. ठीक है. तो फिर आप वहाँ पे कोई भी, अब आपके पास लिस्ट आ गई, आपके पास हर माई नेम इज आरव, हर एक एलिमेंट का इंडेक्स है. यू कैन ट्रैवर्स ओवर दैट लिस्ट एंड you can pull out whatever you want to, no matter what damn thing is written in the question. You can do that with the help of dry run in the paper. Okay, it's that simple. So let's go back and let's try to understand one more function which is there. सर अगर हमने मल्टीपल लाइंस, अगर हमने एक पैराग्राफ ऐड करा तो वो हर एक लाइन जब ईओएल से मिलेगा तो हर एक लाइन को वो एक लिस्ट में वर्ड को ना स्प्लिट ना कर ना ना देगा, ना है ना ना? Arav, that's what we are coming on to. There is the difference between split and split lines. Now what we are coming on to is split lines, right? So I'll tell you about that as well. uh, just use split lines now, so that's what we are coming on to. आपने स्प्लिट को हटाना था नहीं वैसे. सी द थिंग इज कि अगर आप यहाँ पे, आरव बहुत जल्दी कर रहे हो आप. यस सर. ठीक है. सो द थिंग इज कि स्प्लिट लाइंस में एक कैच है. नाउ सी द वे आई वांट टू like go with the flow na, that is not happening. So I would suggest you to just go with my pace, so it would be good for me actually. Okay, I know you might be aware of these functions, that is यस. good. तो हाँ, तो सबसे पहले स्प्लिट फंक्शन हमने पढ़ा है तो उसको आप कमेंट आउट कर दीजिए. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू स्प्लिट लाइंस. नाउ हाउ दिस पर्टिकुलर मेथड is different from split function. What it does is it recognizes where new line character is encountered. Okay, again I am repeating, it recognizes wherever new line character is मतलब wherever it is getting new line character in the file, wherever, no matter if you have put a period, full stop,
हो सकता है आपने 5 लाइंस लिखी, 5 लाइंस में आपने फुल स्टॉप लगा लगा के लाइंस लिखी हुई है. सो फॉर योर कंप्यूटर it doesn't make sense. It only makes sense for the computer to recognize a particular para in form of lines if it is recognizing that new line character, also known as EOL character, which is end of line character. Just like when we try to handle an error in a binary files case, there we reached at EOF error, which means it was end of file error. There we reached on end of files, that's why it was showing us this exception EOF error, क्योंकि हम फाइल के लास्ट में पहुंच गए थे. सो EOF है एक चीज़ आपके सिलेबस में, एक है EOL. EOL stands for end of line character, which here in Python is a new line character, which is \n. Okay, so now what we have to do, in place of str1 where we have written input enter a string, what we will do, the catch here is, if you'll try to put a string on shell, okay, with these new line characters, it will not be able to recognize that as a new line character. So we have to give a string from our end. तो उसके दो तरीके हैं, चाहे वो एक टेक्स्ट फाइल में पड़ा हुआ हो पैरा, या फिर हम अभी डायरेक्ट दे के देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ अभी हम स्प्लिट लाइंस का फंक्शनैलिटी वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग आरव. Wherever you have written this str equals to input enter a string, next to that, तभी ना ये जो आपका वर्ड है, Yes, sir. it could be an internet issue on my end only then. Wait, let me just fix it. So were you able to understand whatever I have said regarding the split lines and split functions so far, boys? Split lines and split functions so far, boys?